Hello everyone, here is Shashank Sekhar Singh from Target Academy, and this is the very important lecture on Rankine cycle. And in this lecture we'll be talking about how to solve numericals from whatever the questions that will appear from Rankine cycle part. Alright, so Rankine cycle, as we have already discussed, it is related to a steam power plant. Alright, so this Rankine cycle, in order to solve these questions, there are many factors that has to be kept in mind. Alright, so let's start with this lecture. Some of the following points that you have to keep in mind while going through the question from Rankine cycle. You have to see the question and you have to try to understand what they are asking to determine. So first point, what is asked to determine? Very clear. They might ask you efficiency, work net, work ratio, all this stuff we'll be talking about during the solving numericals. Alright, now another thing is pay attention to the initial state of the steam. So this is important. What is the initial state of the steam? और ये initial state के बारे में हम लोग जब बात करते हैं, when we are talking about this initial state, then initial state here in this case, the point 1 is the initial state. So if you look closely to the initial state, this state of the steam is in superheated region, right? So see, pay attention to point 1. It is in superheated region. The point 1 is in superheated region, and this is a superheated steam. I can say this point is a superheated steam. Now another point, if I consider 1 dash out here in green color, this is the state where the steam is saturated, because the steam is lying on the saturated vapor line, isn't it? This is the saturated vapor line in blue color, which I have already mentioned to you. So 1 dash is the saturated vapor line, or this is the 1 dash is the state of the steam which is saturated. Alright, and definitely we will be talking about two different pressures between which the Rankine cycle will be operating. So these two pressures, that is P1 and P2, will be mentioned to you in the question, and these two pressures you will have to pay attention to, and corresponding to these two pressures only, all the parameters will be given to you in the form of what? Steam tables. So in that case you will have to learn how to use the steam tables. Alright, important. So when we pay attention to this Rankine cycle CTS diagram, we have pressure P1 and P2. This is the higher pressure, P2 is the lower pressure, and between point P1 and P2 all the functions are taking place. So steam is expanding from 1 to 2 from pressure P1 to P2, and again the pump is pumping the water from pressure P2 to P1. Clear? So pump is consuming certain amount of work, turbine is producing certain amount of work. Alright, heat is supplied at higher pressure and heat is rejected at lower pressure. That is true, completely fine. So when we pay attention to the first state, like this state is whether superheated or not, how to determine the initial state? So this point which I am going to talk about, for example, before the example I'll write down how to determine the initial state. Clear? So it is important how to determine this. So in the for example, in the question you will be mentioned about the two different pressures between which the Rankine cycle is operating. Alright, so we have pressure P1 and P2 mentioned to you, and in the question will be starting as steam at pressure P1 and 600 degrees Celsius enters the turbine, and so on. The question will be followed like this. So I am talking at this moment I am focusing on the initial state of the steam. So how will we determine what is the initial state, whether it is the steam at this condition, whether this steam is either saturated or superheated, how will we determine? So it is important to know how to do it. So in that case you will have to refer down to what? Steam tables. So steam tables in GATE numericals, you will not be getting the entire steam tables with you. They will be mentioning about all the parameters corresponding to the pressures they have mentioned in the question, that is P1 and P2. So corresponding to these two pressures only, which is the pressure of our interest, this the parameters, the different parameters will be given to you. For example, this parameter VF and VG, this is specific volume, and this is
HF, HFG and HG are the specific enthalpy, and they will also mention about the specific entropy part too. Now corresponding to P1, we have to see what is the value of the saturation temperature. Now in this case, corresponding to P1, this is the red line is the P1. So this point is nothing but this is our T saturation at pressure P1, and this is our T saturation at T2, point 2, pressure 2. Alright, so in this case, if you refer down to this numerical, you see pressure corresponding to P1, they have mentioned that the temperature is 450 degrees Celsius. So this T sat 1 is nothing but 450 degrees Celsius. This is the way they will give you, and you have to identify the parameters on TS diagram. Corresponding to pressure P2, they have mentioned that the saturation temperature is 80 degrees Celsius. So this temperature saturation of point 2 is 80 degrees Celsius. Alright. Now they have mentioned about the steam is entering steam at pressure P1 and 600 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे ये थोड़ा सा जानना जरूरी है. वेदर दिस स्टीम इज एट अ सुपरहीटेड स्टेट और सैचुरेटेड स्टेट, विल सी नाउ. काफी आसान है, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको. सो आई विल बी ड्रॉइंग दिस टीएस डायग्राम आउट हियर. ऑलराइट, so I'll just mention about the point 1. So this is our T, this is our S, this is TS. Alright, and we have the saturated liquid line and saturated vapor line, something like this. So the topmost part is the, what is the topmost part? This is the critical pressure. Alright, so in this case we will be having the initial pressure as something like this, and the lower pressure is condenser pressure is something like this. So we have this P2 and we have P1 here, and corresponding to this our temperature mentioned to us is 450 degrees Celsius. तो आइदर आप देख के बता सकते हैं कि ये सैचुरेशन टेम्परेचर कौन सा स्टेट में होगा. दिस थिंग pressure P1 and 450 degrees Celsius, you can tell what is the state of the steam entering the turbine. You can just say. Alright, now see 600 degrees Celsius किधर होगा? In the upward direction. So corresponding to this temperature curve, we will have 600 degrees Celsius something here. And so we need 2 points to fix the state of a system or not. Right? Either we need 2 points. That can be pressure and temperature. Here we have both pressure and temperature. Now here we have pressure, this one P1, and the temperature is given to you as 600 Celsius. So 2 points are required to fix the state of a system. So steam at pressure P1 and 600 degrees Celsius. So if we draw this line horizontally, and wherever it will cut, we will have what? The point 1, this is the initial state. Now from here it can say that the initial state is in superheated region. So you are referring to TS diagram to determine whether the point 1 is in state not or superheated state, not or superheated state. Now you can say directly also, if the given temperature that is T1, that is the initial state of the steam, is greater than saturation temperature at that pressure only. क्योंकि हम लोग कांस्टेंट प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं. सो इफ T1 is greater than this, so suppose we consider 600 degrees Celsius is T1 and our T saturation corresponding to P1. So we are talking about pressure P1. Corresponding to pressure P1, we have saturation temperature as 450 degrees Celsius and T1 is equal to 600 degrees Celsius. Now if it is greater than this, then definitely the steam is in superheated zone. Any doubt in this? I hope this is clear to you. So we know how to fix the initial state of a steam given to us in the numerical. Alright, so ये हम लोग का पहला काम हो गया यहाँ से. Now दूसरा बात, पूरा सॉल्व करने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ. तो with TS diagram only I'll be helping you how to do it. Alright,
So in this case we have the following parameters given to us. So for in this case we have this one. At P2 we have Sg and this is Sf, isn't it? Now how will you determine, suppose after expansion in the turbine we will have point 2, isn't it? So we will have this point number 2. Now this point, where it is, either it is in wet region, ये वेट रीजन में है या कहाँ है, ये कैसे पता चलेगा, है ना? तो इसके बारे में हम लोग एक अच्छे से डिस्कस करते हैं कि कैसे मालूम चलेगा. क्लियर? सो लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स ड्रॉ अनदर TS diagram and then we will be able to answer every single thing out there. ठीक है? So this is our T, this is our S, and this is T. So we will have both the saturated liquid line and saturated vapor line out here. Clear? So in this case we have initial pressure as something like this, the pressure at which the higher pressure of the steam will enter the turbine, and we will have lower pressure of the steam which is the condenser pressure. So इसको जो higher pressure है इसको हम लोग boiler pressure भी बोलते हैं, और lower pressure जो है उसको हम लोग condenser pressure भी बोलते हैं. Alright, so we have P2 here, we have P1. So P1 को हम लोग generally बोलते हैं boiler pressure, because boiler में higher pressure रहेगा, and P2 we tell it as, we refer to it this as condenser pressure, the pressure at which condenser is functioning. Alright, so यहाँ पे हम लोग को मालूम है P2 is less than P1. Now initial state हमने फिक्स कर लिया. मान लो for example the initial state is the superheated state, that is 1. Now from point 1 there will be expansion in the steam turbine, and the expansion generally, expansion in the steam turbine होगा जो, अगर ये expansion in the steam turbine ideal है, if this is an ideal expansion, then this process is known as, this is which process? Reversible adiabatic, or I can say that isentropic process. Isentropic process. It means that the expansion, for this expansion entropy will be constant. It means S1 is equal to S2. So we'll take two different points. For example, we'll talk about another point as something like this, state 1 dash. We have 1 and we'll take 1 double dash, something like here. We'll see one by one. ठीक है? So अगर point 1 से हम लोग 2 में जा रहे हैं, we are going from 1 to 2 and this is isentropic process, so definitely this is the entropy axis. It will drop vertically down to the lower pressure. Expansion, ये सीधा लाइन होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन. So we will have state what? We will have state 2. Now while we talking about this process 1 to 2, so I'll write down in black color 1 to 2. So this is our expansion process, and we have S1 is equal to S2. तो आपको S1 का वैल्यू कैसे मालूम चलेगा? S1 का वैल्यू कैसे मालूम चलेगा? आपको स्टीम टर्बाइंस में या स्टीम टेबल्स में आपको दिया हुआ रहेगा कि कॉरस्पॉन्डिंग टू स्टेट 1 यानी कि सुपर हीटेड जोन में क्या वैल्यू रहेगा. सो योर S1 विल बी गिवन टू यू. ठीक है? S1 अगर नहीं देते हैं तो डिराइव करना मुश्किल है. क्लियर? सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, सी S1 विल बी गिवन टू यू, और हम लोग S1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? S2. तो हम लोग को दोनों वैल्यू मिल गया, S1 और S2 का. नाउ मैच दिस S2 विथ कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ व्हाट? Sg. correspond to the values of Sg. ये पॉइंट क्या है? दिस इज अ पॉइंट lying on the saturated vapor line. So match this S2, compare this S2 with Sg. तो Sg जो है, this is at lower pressure or not? At which pressure? At P2. तो corresponding to pressure P2 हम लोग क्या करेंगे? Sg का वैल्यू देखेंगे, है ना? Will go and
consult the steam turbine. We'll refer steam, sorry, not steam turbines, we'll refer steam tables. Alright, so we will refer this value, refer the steam tables and get the value of SG. तो हम लोग को SG का वैल्यू मिल जाएगा. कहाँ से मिलेगा? Let's move up. We have this प्रेशर P2 है, corresponding to प्रेशर P2. ऐसे जाएंगे तो आपको जाते जाते यहाँ पे SG का वैल्यू मिल जाएगा. सो यहाँ पे आपको SG का वैल्यू दिया हुआ रहेगा corresponding to प्रेशर P2. तो SG का वैल्यू मिल गया और S2 का वैल्यू आपके पास निकल ही चुका, बिकॉज इनिशियल स्टेट ऑफ द स्टीम हैज बीन गिवन टू यू. ऑलराइट, सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, S1 विल बी इक्वल टू S2, ये मालूम चल गया. एंड नाउ कंपेयर S2 एंड SG एट दिस प्रेशर. तो S2 जो है, इफ S2 इज लेस देन SG, ठीक है, तब ये कौन से रीजन में लाई कर रहे हैं? वेट रीजन में कर रहा है ना. इफ S2 इज इक्वल टू SG आफ्टर एक्सपेंशन, देन हम लोग को एक्सपेंशन के बाद क्या मिल जा रहा है? वी आर गेटिंग सैचुरेटेड स्टीम, क्योंकि एक्सपेंशन के बाद हम लोग को अगर कोई पॉइंट मिलेगा तो यहां मिलेगा अगर SG के बराबर मिलता है. एंड इफ S2 इज ग्रेटर देन SG, तो हम लोग को एक्सपेंशन के बाद भी सुपरहीटेड ही मिलेगा, सुपरहीटेड स्टीम मिलेगा. बट ऑल दिस थिंग्स विल बी डन एट प्रेशर, विच प्रेशर? P2. ऑल दिस पैरामीटर्स विल बी ऑन द प्रेशर P2. सो प्रोसेस 1 to 2 के बारे में बात हो गया ऐसे कि कैसे डिटरमाइन करेंगे. सो सिंस S1 इज इक्वल टू S2 दिया हुआ है, ये मालूम चल रहा है आपको अच्छे से. ऑलराइट, देन S2 कहाँ पे है? इट इज लाइंग इन विच जोन, और ये पार्ट क्या हो जाएगा? दिस विल बी SF. So S2 is in which region? Wet region. So can we write down S2 का value as SF plus X SFG? Clear? और S1 का वैल्यू आपको दिया हुआ, तो S2 का वैल्यू आपको यहाँ पे मालूम चलेगा. So this thing you know, this value will be knowing. SF will also you know, and SFG will also be known to you from steam table. Only X is unknown. So आप X का वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना यहाँ से. You will find out the value of X. So since X will be known to you, you will know the dryness fraction, DF will be known to you from the steam turbines, from the steam power plant, from the Rankine cycle. Clear? Now this was the process I was talking about 1 to 2. Now let us talk about the process 1 dash to 2 dash. So if the expansion is done like this from 1 dash to 2 dash, इसको 2 dash मान लो. Alright. Now in this case, you see process 1 dash to 2 dash. अगर ऐसा होता है तो, so this will be the after expansion, the state of the steam that is at point state at 2 dash, we will have S2 dash, and this will is equal to what? SG, that I have already mentioned to you. In that case we are getting saturated steam at pressure P2. मिल रहा है ना? क्लियर? ये वैल्यू S2 इज इक्वल टू SG के बराबर हो जाएगा. कब, कैसे पता करेंगे? आपको S1 का वैल्यू दिया ही हुआ है इनिशियल स्टेट. सो इफ द S1 वैल्यू इज इक्वल टू S2 डैश होगा, और ये अगर SG के बराबर हो जाता है एट दिस प्रेशर P2, then definitely this steam is the state of which? Saturated steam. State is saturated. Alright, now we have another state, we have another process, that is 1 dash, 1 double dash to 2 double dash. So we are talking about process 1 double dash to 2 double dash. So from process 1 double dash to 2 double dash, पहला बात तो आपको मालूम चली है कि 1 double dash जो है that is saturated steam only. Saturated steam at pressure P1, आपको मालूम है ये हायर प्रेशर पे, बॉयलर प्रेशर पे. तो यहाँ का वैल्यू S1 डबल डैश जो है, इसका वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं. So S1 double dash will be given, this is specific enthalpy. Okay, this is small s. So we have S1 double dash is equal to what? SG at P1 or not?
है ना, दिस इज Sg और नॉट, एट विच प्रेशर, P1 बॉयलर प्रेशर पे। तो S1 तो मिल गया आपको, S1 डबल डैश तो आराम से आप स्टीम टेबल से निकाल लोगे। दिस इज कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द स्टीम टेबल्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। राइट, नाउ फ्रॉम स्टीम टेबल्स हम लोग पॉइंट 2 डैश पे आएंगे, 2 डबल डैश पे आएंगे। तो प्रोसेस 1 to 2 डबल डैश मिल रहा है। सो वी विल हैव S1 double dash is equal to Sg at pressure P1 and this is equal to what, S2 double dash हो रहा है, and S2 double dash is lying on, S2 double dash is what, on pressure P2। तो pressure P2 के corresponding S2 double dash को हम लोग क्या ले सकते हैं, SF double dash, for example X SFG double dash, for example I'm referring double dash because I'm talking about the process 1 double dash to 2 double dash. All right, now S2 double dash will be clear to you, it will be like available for you by using the steam tables, and S1 is equal to S2 double dash because the process is what, isentropic. Alright, so in this case S2 का value आपको पता है, and corresponding to the pressure P2, again I am writing this pressure P2, you will have all the values from the steam table SF and SFG. Now again you can find out the value of dryness fraction. Clear? So once you know the dryness fraction, है ना, so once you know the dryness fraction whatever is there, now you can find out the values of what, you can find out the values of enthalpies and all। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अब एक स्टेज आपने पार कर लिया है, that you have determined the most important factor, that is dryness fraction। So dryness fraction आपको एक बार मालूम चल गया, so you can use all the values। So example, let's see, I'll draw the TS diagram once again। So this is T, this is S। So X आपको मालूम चल चुका है। Now using X, that is the dryness fraction, what you will do, आपको पैरामीटर्स निकालना है कुछ, ठीक है। So for example in this case this thing is given to you, P1 boiler pressure is given to you, and then you have condenser pressure as well। So you have P2, you have P1 out here, and the initial state of the steam was, suppose we are talking about the process 1 to 2, what we are talking is process 1 to 2, ठीक है। बाकी पहले एक्सपेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। So since this state 1 is in what, superheated region, so all the values of, like all the parameters corresponding to 1, that is P1, your value of T1, and then corresponding to the superheated state S1, V1 and H1 will be given to you। ये आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है, स्टीम टेबल के हिसाब से सुपरहीटेड स्टीम को corresponding टेबल बनता है। So in that case all these parameters will be given to you। So definitely you have determined X by using what, S1 is equal to S2, and since S2 हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे कि S2 का वैल्यू Sg से कम है क्या। So in this case we have S2 less than Sg, so definitely point 2 is lying in which region, it is in wet region। So point 2 अगर हम लोग को wet region में मिल रहा है, so this point 2 is equal to what, SF plus XSFG। So from this point we can find out the value of X। हम लोग को ये मिल चुका है। हम लोग के पास H1 है, H1 is given to us। Now how to find out H2, ये आपको सोचना है। So H2 के corresponding, since H2 निकालना है, so since point 2 is lying on which pressure, on condenser pressure, so H2 हम लोग लिख सकते हैं, H2 we can write down as HF plus XHFG। So this value and HFG value, HF and HFG will be determined from steam table corresponding to which pressure, corresponding to the pressure of P2। आप निकाल सकते हैं
आपके पास x का भी वैल्यू है, सो यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ H2. सिंस आपके पास H1 वैल्यू है, H2 वैल्यू है, so definitely you can find out what? You can find out the work of expansion, or you can write down as work turbine is equal to H1 minus H2. Now since these are specific values, this will be in kilojoule per kg of steam. I hope there is no doubt in this case as of now. ठीक है? Any doubt in this? No? Now the bigger challenge is, like, from point 2 definitely the steam will lose heat and become saturated liquid at point 3. The state 3 is saturated liquid. So ये हम लोग को मिल रहा है क्या? Saturated liquid state. मिल रहा है ना? So point 3 से point 4 तक क्या होगा? We will have pumping. We will have pumping. So यहाँ पे आपको ध्यान देना है. This is the most important part actually. This thing which is the most important part, I'll write down in red color. Important है यहाँ पे कि point 3 to 4 जो है, that is what? Pumping process is done for the saturated liquid, and the liquid is pumped from P2 to P1 पंप कर दिया जाता है while it consumes work of pump. ये आपको मिल जाएगा. So since work of pumping हम लोग निकालना चाहते हैं, what will be the work of pumping? So we have to find the enthalpies in the different states, that is point 3 and point 4 पे अगर हम लोग enthalpies निकाल लें, है ना? So if you find out the values of H3 and H4, अगर ये दोनों वैल्यू हम लोग को मिल जाता है, then definitely we can use pump work as equal to H4 minus H3 or not. So अगर हम लोग को क्या मिल जाएगा? किलोजूल पर केजी में मिलेगा. क्लियर? नाउ सी हियर, वर्क पंप निकालने के लिए हमारे पास H3 और H4 की जरूरत है. वी नीड H3 एंड H4. नाउ H3 यू हैव, इट्स गिवन टू यू. वेयर इट इज गिवन? इट इज गिवन टू यू इन द स्टीम टेबल्स. कहां पे? सो इन द अंडर द स्टीम टेबल यू हैव टू लुक फॉर HF, क्योंकि ये पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 3, दिस इज नथिंग बट HF. एट विच प्रेशर? एट P2. हम लोग को प्रेशर पे हमेशा ध्यान देते रहना है. तो HF इज corresponding to the steam table. When you refer the steam table, you have to look out to the pressure P2, and corresponding to the pressure P2 you have to find out the value of HF at what pressure? P2. तो ये बात तो आपको क्लियर है. H3 आप निकाल सकते हो इजिली विदाउट एनी कैलकुलेशंस. ऑलराइट. लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना, द प्रॉब्लम इज H4. H4 निकालने के लिए लोग सोचते रह जाते हैं. एक स्टूडेंट का गलती हो जाता है कि H4 निकाले तो निकाले कैसे. दैट इज इंपॉर्टेंट. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाउ टू डिटरमाइन H4. आप H4 कैसे निकालोगे? क्योंकि आपके पास प्रेशर P1 पे क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, एंथैल्पीज का देख लो. आपके पास क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है? यू हैव बीन गिवन दिस HF दिया हुआ रहेगा आपको. एट प्रेशर P1 यू विल बी गिवन HG. HFG दिया हुआ रहेगा आपको यहाँ भी. और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग टू दिस आपको ऑलरेडी स्टेट 1 के बारे में H1 तो दिए हुए हैं. These all things are given, but H4 के बारे में कोई नहीं बता रहा है. H4 is which state? It is in liquid region or not? ये liquid region में है. सबकुल लिक्विड है. तो सबकुल लिक्विड के बारे में there is nothing mentioned about in the steam turbine. There is nothing at all discussed about सबकुल लिक्विड in steam turbine corresponding to any process. ठीक है. तो H4 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? नहीं पता. तो यस, हम लोग को यहाँ पे एक चीज के बारे में ध्यान देना पड़ेगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ऑलराइट. वी हैव टू यूज द वर्क ऑफ ओपन साइकिल. माइनस VDP होता है. ठीक है. माइनस VDP होगा. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें वर्क ऑफ पंप, देखो तो वर्क ऑफ पंप निकालें तो हम लोग के पास V क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम हम लोग के पास क्या है? लिक्विड है कि नहीं है? ये रहा. सो कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट 3 कैन वी हैव द वैल्यू ऑफ VF. यहाँ पे हम लोग VF निकाल सकते हैं.
करस्पॉन्डिंग टू प्रेशर P2, देखो यहाँ पे एक बार चलो स्टीम टेबल्स के पास चलते हैं. सो करस्पॉन्डिंग टू स्टीम टेबल्स वी हैव प्रेशर P2 एंड करस्पॉन्डिंग टू प्रेशर P2 हम लोग के पास क्या रहेगा, Vf का वैल्यू दिया हुआ रहेगा ना. तो Vf तो हम लोग को मिल गया भाई, वी हैव गॉट Vf फ्रॉम प्रेशर P2. सो हम लोग के पास VDP के लिए यहाँ से जो टर्म यूज करते हैं तो हम लोग के पास Vf तो है ही. फ्रॉम विच पार्ट, फ्रॉम स्टीम टेबल्स. नाउ व्हाट अबाउट प्रेशर DP. सो हम लोग का प्रेशर कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, P2 से P1 तक. तो हम लोग के पास चेंज इन प्रेशर भी है ना. तो डेल W ओपन अगर ऐसे लिखते हैं तो टोटल नेट ओपन वर्क जो होगा वो हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे between the pressure this, so we can write down minus VDP from which pressure, from P2 to P1 पंप कर रहा है. ठीक है, तो इसका वैल्यू V तो कांस्टेंट है. कांस्टेंट जनरली ये जो वैल्यू होता है Vf ये लिक्विड है, सो ज्यादा कंप्रेसिबल, देयर इज नो सच एप्रिसिएबल चेंज इन द वॉल्यूम. सो Vf तो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, माइनस Vf इनटू चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2. तो देखो P1 इज ग्रेटर देन P2 है ना. वी हैव P1 एज ग्रेटर देन P2, ये है हम लोग के पास. तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी एज पॉजिटिव. जब ये पॉजिटिव आएगा तो ये पूरा वर्क जो है ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वर्क होगा. तो यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि वर्क इज कंज्यूम्ड. ठीक है, आप नेगेटिव साइन बाद में यूज नहीं करोगे. दिस इज जस्ट अ सिग्नल दैट वर्क इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय द पंप. द कंजम्पशन इज डन ऑलराइट एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. ये नेगेटिव साइन सिर्फ यही बताता है. सो वर्क ऑफ पंप, आपको जो वैल्यू मिला, आपको जो यहाँ पे वैल्यू मिला, दिस वैल्यू फॉर एग्जाम्पल करस्पॉन्ड दिस वैल्यू एज माइनस A मिला. सो मैग्नीट्यूड के बारे में बात करोगे तो विल हैव वर्क ऑफ पंप, अगर लिखते हैं वी हैव A किलो जूल पर केजी, ऐसे लिख सकते हैं. सो सिंस वी हैव H3 है ना हम लोग के पास, देखो यहाँ पे हम लोग के पास H3 है. H3 इज व्हाट, HF, एंड हम लोग को क्या निकालना है, H4 है ना. सो H4 निकालेंगे. तो वर्क पंप तो हम लोगों ने निकाल लिया, वी हैव गॉट एज A, एंड देन दिस वर्क पंप इज व्हाट, नथिंग बट H4 माइनस H3 is equal to A. H3 is known to you because H3 is nothing but HF at pressure P2. So definitely we can have H4 is equal to A plus H3. यहाँ से H4 का भी वैल्यू मिल गया आपके पास. ठीक है, नाउ यू हैव H4 आप निकाल चुके हो, H4 निकाल चुके हो, H3 आपके पास आ गया. यू हैव वर्क पंप ऑल्सो विथ यू. सो यू हैव डिटरमाइंड वर्क पंप, यू हैव डिटरमाइंड वर्क टर्बाइन. सो आपके पास क्या क्या है, यहाँ पे वर्क टर्बाइन है, आपके पास वर्क पंप है ना. सो इन दिस केस यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नेटवर्क. सो नेटवर्क इज इक्वल टू वर्क टर्बाइन माइनस वर्क पंप. क्लियर, दिस विल बी इन किलो जूल पर केजी. डन. नाउ व्हाट अबाउट इफ यू हैव टू फाइंड आउट Rankine efficiency. How will you find out the Rankine efficiency? ये जानना तो जरूरी है. तो we know Rankine whatever efficiency is that work output यानी कि net work output divided by heat supplied. तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुका है, हमारे पास ये वैल्यू अभी तक नहीं पता है. ठीक है, तो corresponding to QS, देखो तो Q supplied कहाँ हो रहा है, Q supplied, supply of heat is done at which pressure? It is done at pressure of P1. So QS करने से, हीट सप्लाई करने से एंथैल्पी इंक्रीज हो जा रहा है. कहाँ से, H4 से H1 तक. H4 से H1 तक हीट सप्लाई करने से एंथैल्पी बढ़ जा रहा है. ऑलराइट, सो H4 पे अगर हम लोग QS देते हैं तो इट इज टर्निंग आउट टू बी H1. सो कैन वी राइट डाउन दैट द वैल्यू ऑफ QS we can write down is equal to H1 minus H4 or not. ऐसे देखो प्रोसेस ऐसे है, H4 है, यहाँ पे हम लोग QS दे रहे हैं तो जाके वो H1 हो जा रहा है. सो दो चीज एंटर कर रहा है, H4 एंटर कर रहा है और QS एंटर कर रहा है, दोनों मिल के क्या हो जा रहा है, प्लस करने के बाद हम लोग को मिल रहा है H1. सो वी कैन राइट डाउन QS is equal to H1 minus H4.
सो H4 हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले निकाला, ये रहा, इसलिए H4 निकालना जरूरी है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द हीट सप्लाइड. So H1 minus H4 मिल गया. This is also in kilojoule per kg. Now we can find out efficiency of Rankine cycle as work net by QS, and all this stuff are known to you. You will be getting the value of the Rankine cycle, that is efficiency of the Rankine cycle, and it's quite easy. So when we talk about like certain numericals that I have for you guys, then it will become easy for you to understand. All right. So in this case we have talked about this part, and this is done. How to read a steam table, and then how to use that steam table for finding out the different parameters on the Rankine cycle. I hope this part is clear to you completely. Is it fine? So this lecture is one of the most important lectures of Rankine cycle. You watch twice at least, and then you will understand how to use it. And then in the next lecture we will be talking about some more important points, and we will utilize those points in the numericals. All right, so by the next lecture, in the next 2 lectures, definitely this analysis of steam cycle will be done, and after this analysis of steam cycle we can start refrigeration also, because both are closely linked, the property diagrams and all. All right, so we can start simultaneously, side by side, so that one concept can be related to the other in the other subject. All right, so till then you just go through this part completely. You will be able to understand it well, and there is nothing to worry about from this part. We will solve some questions from previous years as well. So till then, study well, and please take care of yourself. See you in the next lecture.